A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our new session in this discussion on this short story, A Good Man is Hard to Find by Flannery O'Connor. Today, we are going to discuss the basic storyline and the critical summary of this story under discussion. अजीज़ तलबा व तालिबात, जैसे कि हमने गुज़श्ता अपने सेशन में कॉर्नर को बतौर राइटर डिस्कस किया, यहाँ आज हम वो कहानी जो हमारे सिलेबस में है और ये इसकी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ का नाम भी यही है, ए गुड मैन इज़ हार्ड टू फाइंड, इसको आज हम मुख्तसर अंदाज में इसकी समरी, इसकी स्टोरी लाइन को देखेंगे ताकि बाकी मानदा हिस्से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं फिर हम उनकी तरफ जो इसमें से स्टेम आउट करते हैं सवाल, फिर हम उनकी तरफ जो है वो रुख कर सकें. Dear students, A Good Man is Hard to Find is a short story written by Flannery O'Connor in 1953. The story appears in the collection of her short stories of the same name. The story presents a brutal murder of a family at the hands of a criminal and leaves behind the looming shadow of death. O'Connor utilized the dark and morose in her writing to reveal beauty and grace. The comparison presenting the dark side of life in contrast to the beauty and grace present in religion. She has depicted different types of character from the South. In this story, violence reveals divine grace. Divine grace, or God's unmerited favor, is a concept fundamental to humanity's salvation in Christian theology. Christians believe that the imperfect can be reborn spiritually. People can be saved or salvaged by grace through Jesus Christ. While the two seem to be different concepts, according to O'Connor's Catholicism, the grandmother and the misfit, the main characters of this story, both are the same at their core. Sinners in need of grace. Abby Harris says in her short article about this story, the misfit is blatantly sinful and enraged at the concept of God's grace. He is infuriated rather at the concept of God's grace. And the grandma masks her sinfulness and respectability and chooses to treat God as something that she can accept or ignore depending on her situation at present. तो बेटे ये कहानी जो है मजमूई तौर पर आपको पता है गुड एंड इवल की जो स्कर्मिश चली आ रही है अज़ल से, उसको एक डिफरेंट अंदाज में पेश करती है, एक रिलीजियस व्यू पॉइंट के साथ. ओकॉनर का ख्याल ये है कि ये जो लोग होते हैं जिन्हें हम मिसफिट्स कहते हैं इन सोसाइटी, they can be salvaged, saved by grace of God. And this grace of God is just permeating the whole universe. And especially for the sinners, it is the need of the hour. A sinner can be reborn spiritually if he is shattered and dethroned, downtrodden फिज़िकली. अगर जिस्मानी तौर पर फिज़िकली जो है वो एक सिनर जो है वो तबाह भी हो जाए, थ्रैश भी हो जाए तो कोई नहीं, उसे स्पिरिचुअली जो है रिजरेक्शन मिल सकती है थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉड. दिस काइंड ऑफ रिजरेक्शन एज अ ह्यूमन बीइंग थ्रू ग्रेस ऑफ गॉड इज़ द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी. देयर यू विल फाइंड द कंपैरिजन एंड द कंट्रास्ट बिटवीन द गुड एंड इवल. द डार्क फोर्सेस of evil, crime, murder have been presented in contrast to the
good forces of beauty and grace and salvation of God's grace. You may say that the writer has very successfully presented the antagonism between good and evil through this short story. Dear students, here is a very brief summary or the storyline of this very short story we are going to study. A man named Billy intends to take his family from Georgia to Florida for a summer vacation. But his mother, referred to as the grandmother in the story, wants him to drive to East Tennessee, where the grandmother has some friends or connections, she says. She argues that his children, John Wesley and June Starr, have never been to East Tennessee, and she shows him a news article in the Atlanta Journal Constitution about an escaped murderer who calls himself the Misfit and was last seen in Florida. तो एक ख़ानदान का सरबराह है जॉर्जिया से फ्लोरिडा अपने बच्चों को सैर के लिए लेकर जाना चाहता है। वेकेशन हुई हैं, बच्चों को छुट्टियां हैं, तो और ये ट्रैवल करना चाहते हैं एक ऑन अ हैप्पी फैमिली टूर, वेकेशन टूर, हॉलीडे टूर। तो इसकी जो माँ है, जिसे यहाँ स्टोरी में ग्रैंड मदर के तौर पर पेश किया गया है बेली, ये उन्हें जो है वो मिस गाइड करती है और कहती है कि ये मैंने एक अखबार में पढ़ा है कि फ्लोरिडा की तरफ जो है ना एक मिसफिट नामी एस्केप्ड प्रिजनर एंड एस्केप्ड मर्डरर जो है वो क्रिमिनल जो है वो खुला फिर रहा है, तो उस तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें जो है ना ये टेनेसी की तरफ जो है वो ईस्ट की तरफ जाना चाहिए। मज़ीद ये नहीं, उन्हें जो है वो मगरब की तरफ जाने की बजाय मज़ीद मशरक़ की तरफ ले जाती है, जो कि पहले ही क्राइम्स का गढ़ है। टेनेसी और जॉर्जिया ये दोनों रियासतें जो हैं वो वैसे ही क्राइम्स के बारे में मरूफ़ हैं, आज भी मरूफ़ हैं, तो उस ज़माने में ज़्यादा मरूफ़ थी। तो ये पहले ही जो है ना वो उनको ये कह कर के मेरे वहाँ कुछ दोस्त पुराने हैं, कनेक्शंस हैं, ये उनको जो है ज़बरदस्ती फैमिली को मिसगाइड करती हुई फ्लोरिडा ले जाने की बजाय उन्हें दूसरी समत में, उल्टी समत में लेकर चल पड़ती है। तो यहाँ से उनकी जो है ना असल में फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ द स्टोरी मिसहैप जिसे कहते हैं कहानी में, वो शुरू हो जाता है कि मंजिल से जो है वो उन्हें हटा देती है थ्रू हर मिसगिविंग्स, थ्रू हर मिसकंसेप्शंस, थ्रू हर मिसगाइडिंग इंफॉर्मेशन। The next day, the grandmother wakes up early to hide her cat, Pitty Singh, in a basket on the floor in the back of the car. This pet, the cat of this grandmother, plays a significant role in twisting the events of this story later on, in the later stages, in the middle of the story rather. तो अगले दिन सुबह सवेरे ये बहुत जल्दी जो है वो इनकी माँ जो है वो बच्चों की ये दादी माँ है, जो दो बच्चे जिनका नाम पीछे आया है, तो ये सुबह सवेरे उठ जाती है ताकि ना ख़ानदान वाली जो गाड़ी है ना जिसमें इन्होंने सफ़र करना है उसके अंदर अपनी मोनो बिल्ली को छुपा दे, क्योंकि वो शायद साथ ना ले जाने दें, इसे खतरा है कि ये पीछे भूखी रह जाएगी, मर जाएगी। शी इज़ वरीड दैट द कैट विल डाई while they are gone. Billy finds his mother sitting in the car. बेली जब बाहर निकलता है अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, तो वो पहले ही जो है ना वो वहाँ दादी अम्मा जो है वो सीट मल के बैठी हुई है। ड्रेस्ड इन हर बेस्ट क्लोथ्स, बड़े शानदार कपड़े पहने हुए हैं, सूट बूट, एंड एन ऑस्टेंटेशियस हैट, एक बड़े स्नोबिश किस्म का ऑस्टेंटेशियस उसने हैट भी पहन रखा है, जैसे किसी बड़ी तकरीब में जा रही है। इफ़ शी कुड डाई इन एन एक्सीडेंट अलॉन्ग द रोड, she wants people to see her corpse and know that she was refined and a lady. ये देखे स्नोबरी का इजहार जो है वो अपने ड्रेस से भी करना चाहती कि अगर खुदा न खास्ता रास्ते में कहीं, उसकी सोच है कि फैमिली को एक्सीडेंट पेश आ जाए ना तो उसकी मौत वाक़या हो जाए तो लोग देख कर कहें कि मरने वाली माई जो थी ना बड़ी, देखो जी सूट शूट पहना हुआ है, हैट लगाया हुआ है, तो कोई ख़ानदानी किस्म की बड़ी उम्दा मिजाज, उम्दा एटिकेट्स रखने वाली कोई
جو تھی ریفائنڈ مینرز والی کوئی خاتون تھی. لاش دیکھ کے لوگ ہیں یہ اس کی سوچیں دیکھیں. دے آر بلیکش کانسیپٹس, بلیکش تھنکنگ یو مے سے. دا گرینڈ مدر ٹاکس کانسٹنٹلی ڈیورنگ دا ٹرپ. مائی کو بولنے کی عادت بہت ہے تو یہ چپ کر کے نہیں بیٹھتی ہے. ان کا سفر شروع ہوتا ہے تو بس یہ اپنی وہ شٹر بٹر شروع کر دیتی ہے. ٹرائنگ ٹو انگیج ہر ٹو گرینڈ چلڈرن گیمز. اپنے دونوں جو اس کے پوتے ہیں, پوتے پوتی جو ہیں, اینڈ ٹیلنگ دیم جوکس اینڈ اسٹوری. ان کو مذاق شذاق کرتی ہے, ان کو کہانیاں سناتی رہتی ہے. اباؤٹ وچ جون اسٹار میکس ڈسڈینفل کمنٹس. بڑی بدتمیزی والا یہ بچہ ہے جون اسٹار, وہ اس کی کہانیوں سے متاثر نہیں ہوتا. شی ریکالز ہر یوتھ ان دا اولڈ ساؤتھ, ریمینیسنسنگ اباؤٹ ہر courtships and how much better everything was in her time. جوانی کے زمانے کی اپنی یادیں تازہ کرتی ہے کہ جب وہ کس طرح سے وہ courtships کیا کرتی تھی اور کس طرح جو تھا وہ کتنا شاندار وقت تھا. وہ بھاگی پھرتی تھی ایک وہ تتلی کی طرح. when children were respectful and people did right then. تو یاد آتا ہے کہ آج کل کے بدتمیز بچے جیسے میرے یہ پوتے پوتیاں ہیں, فوراً کمپیئر کرتی ہے اپنے ماضی سے. اس زمانے میں بچے بڑے رسپیکٹفل ہوتے تھے, بڑوں کا دھیان رکھتے تھے اور صحیح چلتے تھے زندگی کے راستے پہ. آج کے بگڑی ہوئی نسل ہے یہ وغیرہ. تو تنقیدی نقطہ نظر اپنے پوتے پوتیوں سے جو ہے وہ برگشتہ ہے. Dear students, during their entourage on the road, this family comes to a stop point, a restaurant, on the way to their unknown destination of this vacation trip. When the family stops at an old diner, that is a restaurant, outside of the fictitious town of Timothy, یہ فرضی قصبہ ہے بیٹے جارجیا, for lunch, she talks to the owner, Red Sammy, about the misfit. اچھا اب دیکھیں یہ اس نے چونکہ وہ اخبار میں وہ ایک ٹکڑا خبر پڑی ہوئی ہے مس فٹ کے بارے میں, اور یہ وہاں جو اس ریسٹورنٹ کا مالک ہے ریڈ سیمی, اسے اس کے موضوع پر گفتگو شروع کر دیتی ہے. چونکہ بطونی خاتون ہے تو زبان اس کی نہیں رکتی ہے. He and the grandmother agree that things were much better in the past. یہ دونوں آپس میں متفق ہو جاتے ہیں. وہ بھی ذرا ڈائنر والا جو مالک ہے وہ تو اس کے تو کسٹمر ہے نا, تو اسے ظاہر ہے کسٹمرز کو ناراض نہیں کرنا ہے. وہ مائی سے اتفاق کرتا ہے کہ ہاں جی ماضی بہتر تھا آج کے مقابلے میں. اینڈ دیٹ دا ورلڈ ایٹ پریزنٹ از ڈی جنریٹ, بگڑی ہوئی دنیا ہے. شی کنکرس ود سیمیز ریمارک دیٹ اے گڈ مین از ہارڈ ٹو فائنڈ. یہ والا جو ہے نا جملہ, یہ اس کا وہ کرکس بن جاتا ہے اس کہانی کا کہ آج کے دور میں ایک اچھا آدمی ڈھونڈنا جو ہے نا بڑا دشوار کام ہے. Dear students, when the family restarts that entourage after sitting there on the diner for some time, uh, taking something to eat, after the family returns to the road again, the grandmother begins telling the children a story about a mysterious house nearby with a secret panel, a house she remembers from her childhood. اب یہ گرینڈ مدر جو ہے جو پہلے ہی ان کو مس گائیڈ کر کے غلط علاقے کی طرف لے آئی ہے, یہ جانا فلوریڈا کی طرف چاہتے تھے, تو اب یہ ہائی وے پر سفر کرتے ہوئے جو ٹینیسی کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو اب ایک اور جو ہے وہ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ مائی جو ہے وہ بچوں کو بتاتی ہے کہ جی بچپن کی اپنی کہانی, کہ میں نے اس علاقے میں قریب ہی نا ایک ذیلی سڑک پر ایک گھر دیکھا تھا جو بڑا پراسرار قسم کا تھا, جس میں ایک دروازہ جو نا خفیہ سیکرٹ پینل وہ کھل جا سم کی مانند ہے. تو جادو وہاں یہ وہ مسٹری پائی جاتی ہے. دس کیچز دا چلڈرنز اٹینشن. تو بچے پہلے ہی جو ہیں وہ اس طرح کی پراسرار چیزوں کو دیکھنے کے جو ہے وہ شوقین ہوتے ہیں. اینڈ دے وانٹ ٹو وزٹ دا ہاؤس. اب یہ بچے بھی جو ہے اپنے والد کو جو آگے ڈرائیو کر رہا ہے گاڑی, اس سے مصر ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ گھر ضرور دکھائیں جی جو دادی اماں کہہ رہی ہیں.
So they harass their father until he reluctantly agrees to allow them just one side trip. तो अब ये मेन हाईवे से मजबूरन बच्चों के कहने पर एक जैली सड़क की तरफ गाड़ी मोड़ता है. एज ही ड्राइव्स देम डाउन ए रिमोट डर्ट रोड, कच्ची पक्की सी सड़क है, गर्दालूद सी. The grandmother suddenly realizes that the house she was thinking of was actually in Tennessee, not in Georgia. तो यकदम माई को याद आता है कि ओहो, वो घर जो था ना वो इस इलाके में तो नहीं था, टेनेसी की तरफ, ये तो जॉर्जिया की तरफ कोई घर था, इस तरह का मिस्टीरियस. That realization makes her involuntarily kick her feet with which frightens the cat. तो जो टोकरी इसने छुपा के रखी हुई है ना, जिसमें बिल्ली इतने छुपाई हुई है पैरों में, तो वो बिल्ली डरती है, इसके पैर यकदम ये हड़बड़ा जाती है ना कि मुझे गलत मैंने रास्ता बता दिया अपने. causing him to spring from his hidden basket into Belly's shoulder. यकदम वो टोकरी में से बिल्ली कूदती है, तो वो जो ड्राइवर के शोल्डर पर जाके यकदम अपने वो बेली के कंधों पर जा बैठती है. इससे उसके जो है ना वो तवज्जो वो हट जाती है स्टीयरिंग से. Belly then loses control of the car and it flips over. गाड़ी उल्ट जाती है, कच्ची सड़क है पहले ही, एंडिंग अप इन ए डिच, नीचे एक गड़ा है बिलो द रोड, सड़क के नीचे, उसमें गाड़ी जो है वो उल्ट जाती है. नियर टूम्सबरो, ये भी एक छोटा सा वहाँ को नज़दीक में गांव है. ओनली द चिल्ड्रंस मदर इज़ इंजर्ड. लेकिन इतफाक़ से इस एक्सीडेंट में ज़्यादा ज़ख्मी कोई नहीं होता, सिर्फ बेली की वाइफ जो है वो इंजर होती है. द चिल्ड्रन आर फ्रेंटिक विद एक्साइटमेंट, पुरजोश हैं कि अब वो जादू वाला घर देखेंगे. एंड द ग्रैंड मदर्स मेन कंसर्न इज डीलिंग विद बेलीज एंगर. अब वो बेटा अब गुस्से में है कि माई ने मुझे मिसगाइड कर दिया, मुझे इस कच्ची सड़क पर आना नहीं चाहिए था, अब गाड़ी को कैसे सीधा करना है, दोबारा जर्नी रीस्टार्ट करनी है, कैसे कहाँ आगे जाना है, तो फिक्रमंद है पहली बार. Dear students, their bad luck has already been started due to the misconceptions and disinformation of the grandmother. She has led them to a disaster rather. तो ये एक जैली सड़क पर एक एक्सीडेंट का शिकार, वेरान इलाका, नो पीपल आर अराउंड, नो ट्रांसपोर्ट, नथिंग एल्स. तो they are just there to face the end of their lives. Shaking in the ditch, the family waits for help. When the grandmother notices a black hearse coming down the road, she flags it down until it stops. फिर ये दादी अम्मा ही एक गाड़ी को देखती है और वो उसको ये लहरा के झंडियाँ उन्हें बुलाती है हेल्प के लिए. 3 men come out and begin to talk to her. 3 आदमी उसमें से बाहर निकलते हैं और ये उनसे बातचीत शुरू कर देती. दादी अम्मा जो वो लीड करती. All 3 have guns. अब देखें ये तीनों जो हैं इनके पास गन्स हैं. The grandmother says that she recognizes the leader. छूटते ही उसे कहती है कि मैंने लीडर को पहचान लिया है. The quiet man in glasses has the misfit. जिसने वो चश्मे लगा रखे हैं जैसे फिल्मों में होता है. तो एक उनका जो है उन मरोन्स का जो है वो एक लीडर जो है वो मिसफिट है. तो दादी अम्मा कहती हैं हाँ अखबार में मैंने तुम्हारी तस्वीर भी देखी है और मैंने पढ़ा है. तो बस छूटते ही कहती है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है. He immediately confirms this, saying it would have been better for them all if she had not recognized him. अब ये नुक्ता जो है वो कहानी का टर्निंग पॉइंट है. ये मुजरिम जो है वो उनसे कहता है कि अच्छा होता कि अगर आप मुझे ना पहचानते तो आप सब ज़िंदा रह सकते थे. और एंड बेली कर्सेस हिज मदर. अब बेली जो है वो कहता है कि माँ जो है ना ये हमें ले डूबी. द मिसफिट्स मैन टेक बेली एंड जॉन वेस्ली इनटू द वुड्स ऑन ए प्रीटेंस एंड 2 पिस्टल शॉट्स रिंग आउट. अब ये ज़रा इंतहाई मुख्तसर, चूँकि मैंने इसको ब्रीफ समरी रखी है बेटे, तो दरमियान में गुफ्तगू बहुत होती है, लेकिन ये अपने 2 मतहतों को कहता है कि ये 2 अफराद को ले जाओ और इनको गोली मार दो जंगल में ले जाके. वो साथ ही करीब में उनको झाड़ियों में ले जाते हैं दोनों को, इस माई के बेटे को और वो बच्चे को, और उन्हें गोली मार देते हैं. तो 2 पिस्टल शॉट्स सुनाई देते हैं. द मिसफिट
claims that he has no memory of the crime for which he was imprisoned. گفتگو کے دوران وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کس جرم میں مجھے سزا ہوئی تھی. When he was informed by doctors that he had killed his father, he claimed that his father died in a flu epidemic. بہرحال ڈاکٹروں نے اسے بتایا تھا کہ اس نے اپنے ابو کو مار دیا، تو یہ گویا اپنے باپ کا قاتل ہے. بہرحال پھر بھی وہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں میرے ابو نزلے زکام سے مرے تھے. تو یہ مائی کہتی نا کہ تم کس جرم کی سزا تمہیں ہوئی تھی. پھر اپنی ماضی کی داستان یہ بھی مائی کو سنانے لگتا ہے. مائی سے گفتگو اس کی جب وہ گرینڈ مدر سے جب وہ ہوتی رہتی ہے اسی درمیان میں. تو ہی از اے پروفیشنل ٹائپ آف کلر یو مے سے. The man then returned to take the children's mother, the baby, چھوٹا سا بچہ بھی ہے, and June started to the woods for the same purpose as Billy and the boy. تو اب اگلا قتل جو ہے یہ بچوں کی ماں اور ایک ننھا سا بچہ ہے اور ساتھ میں وہ بیٹی. یہ پہلے دو افراد کو پہلے قتل کر چکے ہیں, تو یہ اس کو بھی لے جاتے ہیں ان کو بھی. The grandmother begins pleading for her own life. اب دیکھیں مائی کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ اسے بھی نہیں چھوڑے گا مس فٹ. تو اب یہ جو ہے وہ اس سے آرگومنٹ شروع کر دیتی ہے کہ چلو میری زندگی کسی طرح بچ جائے. When the misfit talks to her about Jesus, he expresses his doubts about his raising Lazarus from the dead. تو یہ misfit جو ہے وہ پھر اس سے گفتگو شروع کر دیتا ہے مذہب پر کہ وہ یسوع مسیح علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. تو وہ اس پر شک کا اظہار کرتا ہے کہ یہ لزارس کو جو تھا یہ جیزس کرائسٹ نے زندہ نہیں کیا تھا. بہرحال یہ ایک مذہبی بحث ان کے درمیان چھڑ جاتی ہے. As he speaks, the misfit becomes agitated and angry. He snarls into the grandmother's face and claims that life has no pleasure but meanness. زندگی نے اسے جو کوئی خوشی نہیں دی, بس زندگی بڑی کمینگی کرتی رہی اس کے ساتھ. In her growing confusion, the grandmother thinks that the misfit is going to cry. وہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ اپنے کیے پر پچھتا رہا ہے. So she reaches out and touches his shoulder tenderly, saying, "Why you are one of my babies." تو جیسے محبت کا اظہار کرتے ہیں, قریب جاتی ہے اس کے شولڈر کو چھو کے, کہتی نہیں تمہیں دنیا میں محبت کسی نے نہیں دی تو میں تمہاری ماں ہوں. You are one of my own children. His reaction is to jump away. لیکن وہ اچھل کر پھر پریاڑ جاتا ہے, as if a snake had bitten him. جیسے کسی سانپ نے کاٹ لیا ہو. And he kills her with 3 shots through the heart. اور وہ اپنے پسٹل کی 3 گولیاں جو ہے اس کے دل میں اتار کے دادی اماں کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے. تو اس طرح سے یہ خاندان جو ہے one by one is killed by these killers. The point is that the grandmother had recognized them. So to hide their identity as criminals, as they are escaping from the clutches of law, they kill this family so their identity should remain hidden. When the family has all been murdered through this brutal act of killing, the misfit takes a moment to clean his glasses and pick up Pitty Singh, جو بلی ہے نا اس کو اٹھا لیتا ہے. She states that the grandmother would have been a good woman if there had been somebody there to shoot her every minute of her life. The story ends with the misfit chastising one of his sidekicks, Bobby Lee, for making a comment. Some fun. Shut up, Bobby Lee, he resorts. It is no real pleasure in life. تو یہ قتل کرنا جو ہے یہ ان کے لیے معمولی کھیل ہے. They are criminals. There is violence in this story. But the main concern of the writer is the dialogue, the religious dialogue between grandmother and the misfit, which will be discussed in our later discussions in this short story. تو بیٹے یہ مختصر سا میں نے اس کو بہت بریف جو ہے وہ آپ کہیں سے اور اس کی ڈیٹیل سمری بھی دیکھ سکتے ہیں. اور
میں نے اس کو انتہائی مختصر کر دیا ہے ٹو لمٹ اٹ ٹو دا نیڈز آف ایگزامینیشن. تو یہ چونکہ آپ کو محض حوالے کے لیے ہی کسی سوال میں لکھنی پڑ سکتی ہے، تو اس لیے اسے ٹرم کر کے انتہائی، بلکہ برشنگ اور ٹرمنگ اس کی کر کے جو ہے وہ میں نے اسے آپ کے سامنے رکھا ہے، ٹیکنگ اٹ فرام ڈفرینٹ سورسز. تو انتہائی مختصر ہے. آپ اضافہ کرنا چاہیں، یعنی اس کی ڈیٹیل سمری دیکھنا چاہیں، تو وہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، وہ بھی دیکھ لیجئے گا. باقی اس کے تنقیدی سوالوں کو انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے. Dear students, thank you very much for participating in today's discussion. Till the next discussion lesson, it is goodbye and Allah Hafiz from my side. Thank you very much again.